Hello friends, so hope all of you are doing well. In today's session we are going to discuss a very interesting poem by George Herbert, The Pulley. So इस poem को हम लोग पूरा line by line discuss करेंगे. First of all because this poem is very small. सिर्फ 20 लाइन्स का पोएम है गाइस. 4 स्टैंजा का पोएम है जिसमें हर स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं. एंड ऑल्सो कंपेयरिंग इट फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, इससे एक डायरेक्ट सवाल पूछा गया था इन 2019 जून टर्म एंड एग्जामिनेशन. सो फ्रॉम ऑल दैट रेस्पेक्ट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड दिस पोएम इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी कंपेयर्ड because this is a metaphysical poem. Okay, in this session we are also going to discuss about the question that was asked from this poem The Pulley by George Herbert, that was asked in June 2019 term and examination. But before we do that and go and discuss the main plot and summary of the entire poem, a gentle reminder for all the subscribers of our channel and also those who are watching this video that we have uploaded more than 40 videos in 2 playlists basically covering the MEG-1 and MEG-3 British poetry and British novel. So we strongly recommend कि आप लोग जाके वो वीडियो देखो. Will give you a huge boost. The link of those playlists are given in the description below. So do consider watching those playlists. So before we understand the summary of the entire poem line by line, we analyze the poem. Let us understand a little bit about the background of the poet here, that is George Herbert. Basically George Herbert जो है guys, he was born on 1593 and died in a very young age of 1633. He was a Welsh-born poet, orator and priest of the Church of England. His poetry is associated with the writings of metaphysical poets and he is recognized as one of the foremost British devotional lyricists. He was born into an artistic and wealthy family and largely raised in England. He received a good education that led to his admission to Trinity College, Cambridge in 1609. He went there with the intention of becoming a priest, but he became the university's public orator and attracted the attention of James I. He served in the Parliament of England in 1624 and briefly in 1625. After the death of James I, Herbert renewed his interest in ordination. He gave up his secular ambitions in his mid-30s and took holy orders in the Church of England, spending the rest of his life as the rector of the little parish of St. Andrew's Church, Lower Bemerton, Salisbury. He was noted for unfailingly care for his parishioners, bringing the sacraments to them when they were ill and providing food and clothing for those in need. Henry Vaughan called him a most glorious saint and seer. So यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, आपको इतने डिटेल्स में नहीं जाना है एक्चुअली अबाउट द पोएट, बट एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू or little bit of background of the poet is actually important to understand the psyche of the entire poem. जो जॉर्ज हर्बर्ट थे वो he was basically a priest here. उनका बचपन से एम ही ये था कि उनको प्रिस्ट बनना है एंड दैट इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन ऑल ऑफ हिज पोएम्स हियर. और द प्यूली इज़ नॉट अ एक्सेप्शन. यहाँ पे भी हम लोग जो देखेंगे उनका पोएम जो है बेसिकली ही इज़ ट्राइंग हियर टू कनेक्ट गॉड हियर इन हिज पोएम. एंड जो यहाँ पे बातें किया गया है दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम गॉड हियर. सो द पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइज एंड लेट्स without any further ado let's move on to it. So the first stanza says, when God at first made man, having a glass of blessings standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches which dispersed lie, contract into a span. सो इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस. यहाँ पे पहला तो जो दो लाइन है, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, इसका मतलब है भगवान ने ईश्वर ने जब पहली बार इंसानों को बनाया था, मानव जाति को बनाया था, तब क्या था, उनके हाथ में एक ग्लास था और दैट ग्लास वाज फिल्ड विथ ऑल द ब्लेसिंग्स. फाइन, आगे जाके जानेंगे कि ब्लेसिंग्स में क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है. तो गॉड यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि लेट अस सेड ही का रेफरेंस यहाँ पे भगवान को किया गया है. ठीक है, तो लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन. ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि जितना भी है भगवान के पास सभी भगवान इंसान को देना चाहते हैं, मानव जाति को देना चाहते हैं. लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाइक कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन. सब कुछ जो ग्लास में है वो सब कुछ ही भगवान निछावर करना चाहते हैं मानव जाति को. तो अगले जो स्टैंजा है वहाँ पे जाते हैं. वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है कि सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड
the way. Then beauty flowed. Then wisdom, honor, pleasure. सो पहला जो दो लाइन्स है बहुत इंटरेस्टिंग है. भगवान ने जो अपना वो ग्लास था, ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, उससे जो पहला ब्लेसिंग पोर किया दैट वाज स्ट्रेंथ. ओके, स्ट्रेंथ टू द एंटायर ह्यूमन काइंड टू सर्वाइव. ठीक है, उसके बाद क्या दिया? उसके बाद दिया ब्यूटी. ब्यूटी फ्लोड. एंड देन विजडम, उसके बाद ऑनर, उसके बाद प्लेजर. उसके बाद ब्यूटी गया स्ट्रेंथ के बाद. ठीक है, उसके बाद विजडम एंड देन ऑनर और प्लेजर. So when almost all was out, God made a stay, perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom lay. So ये जो लास्ट के 3 लाइन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आफ्टर गॉड हैज़ गिवन अस द ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ, देन योर ब्यूटी, विजडम, ऑनर एंड प्लेजर, भगवान ने क्या किया? भगवान रुक गए, क्योंकि जो ग्लास था, ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स था, उसको जब पोर कर रहे थे एंटायर ह्यूमन काइंड पे, जो ग्लास में आखिर का जो ब्लेसिंग था वहाँ पे भगवान रुक गए. क्यों रुक गए वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या था ये जान लेते हैं. जो लास्ट का लाइन था वो आप पढ़ो ठीक से, आपको समझ में आएगा. रेस्ट इन द बॉटम ले. इसका मतलब ये है गाइस, ये जो वर्ड रेस्ट है वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे. इसका रेफरेंस किसकी तरफ जा रहा है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को. तो बॉटम में जो है वो सुख और शांति को रेफर किया जा रहा है. ठीक है, रेस्ट से हम लोग क्या रेफर कर रहे हैं? सुख और शांति को रेफर कर रहे हैं, जो आखिर में रह गया था और भगवान ने उसको ह्यूमन काइंड को नहीं दिया, मानव जाति को नहीं दिया. अब क्यों नहीं दिया ये जानने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट जो स्टैंजा है वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है. फॉर इफ आई शुड सेड ही. किसने कहा है? भगवान ने कहा है. ओके, ही का मतलब यहाँ पे भगवान ही है. फॉर इफ आई शुड सेड ही बिस्टाउ दिस ज्यूअल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैंने ये भी मतलब अपने क्रिएचर्स को दे दिया होता. क्रिएचर्स कौन है? हम हैं, मानव जाति. ठीक है, बिस्टो दिस ज्यूअल. ज्यूअल का रेफरेंस यहाँ पे किससे हो रहा है? सुख शांति से. जो लास्ट में आखिरी का रह गया था रेस्ट, उसको ही सुख शांति से रेफर किया गया है, कनेक्ट किया गया है. और वो भी अगर मैंने दे दिया होता तो क्या होता देखते हैं. ही वुड एडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी. तो अगर हम लोग के पास सब कुछ होता, आप लोग खुद एनालाइज करो, अगर हम लोग के पास स्ट्रेंथ होता, ब्यूटी होता, विजडम होता, ऑनर होता, प्लेजर होता और उसके साथ सुख शांति भी होता, तो क्या होता? क्या हम लोग भगवान के पास जाते? ऑफ कोर्स नॉट. आंसर इज क्लियरली नो. अगर हम लोग के पास सुख शांति भी मिल जाता हम लोग को, दैट इज़ द मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, एक प्राइमरी जो इच्छा है इंसानों का वो है सुख शांति. यू कैन सी द रिच पीपल ऑफन टर्निंग इनटू स्पिरिचुअल वेज. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनके पास एट द एंड क्या नहीं होता है? सुख शांति. तो वो लोग स्पिरिचुअल वे में बेंड हो जाते हैं. तो अगर भगवान ने वो भी दे दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान को हम लोग इज्जत नहीं देते और कभी भी हम लोग भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते. इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि भगवान बहुत सेल्फिश है. इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने जब लाइफ टाइम में, एंटायर लाइफ टाइम में हम लोग को गॉड से कनेक्ट होना, वो ही हम लोग का डेस्टिनी है. ठीक है, एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बोथ शुड लूजर्स बी. अगर भगवान ने हम लोग को सुख शांति दे दिया होता और अगर हम लोगों ने अपने लाइफ टाइम में कभी भगवान को जाना ही नहीं होता और कभी अप्रोच ही नहीं किया होता, तो हम लोग बोथ लूजर्स होते. भगवान भी लूजर्स होते और हम लोग भी लूजर्स होते. जो आखिरी स्टैंजा है दैट गोज समथिंग लाइक दिस. येट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ रैपनिंग रेस्टलेसनेस. लेट हिम बी रिच एंड वेरी, that at least if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. So ये जो पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, considering the fact कि this paragraph was exactly asked in the last year June 2019 term and examination of the MEG paper. तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आप भगवान बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे from the eyes of the poet who is George Herbert. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि येट लेट हिम कीप द रेस्ट. तो भगवान ऐसा बोल रहा है कि बाकी सब कुछ मानव जाति रख ले, जो कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था. स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर एंड प्लेजर, और कीप देम विथ राइपनिंग रेस्टलेसनेस. अब क्या है कि भगवान ये भी बोल रहे हैं कि ये सब हम लोग के पास होगा, फिर भी हम लोग को सुकून नहीं मिलेगा. विल बी इन डिसकंटेंट. ठीक है, हम लोग डिसकंटेंट में रहेगा. एंड लेट हिम बी रिच एंड वेरी. तो यहाँ पे ये सेंटेंस का मतलब है, वेरी का मतलब है टॉर्न आउट. ठीक है, टायर्ड, थक जाना. फाइन. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि
जो लोग आप रिच हो जाओगे लेकिन आप लोग को सुख शांति एंटायरली नहीं मिलेगी until and unless you turn towards God. Fine. That at least if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. अब देखो दो तरीका है जो यहाँ पे पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं, through which actually people tend to go towards the direction of spirituality or God finally. एक तो होता है अच्छाई, ठीक है, जो लोग अच्छे होते हैं they discover in the very early age कि the destiny of life is to ultimately know God and to go towards the line of spirituality. अपने लाइफ में spirituality लाना ही और अच्छाई लाना ही एक डेस्टिनी होता है ह्यूमन काइंड का. तो जो लोग अच्छे होते हैं दे इवेंचुअली एंड अप फॉलोइंग दिस पाथ, और जो लोग नहीं होते हैं, ठीक है, उन लोगों के पास तो सुख शांति होती नहीं है, और सुख शांति के खोज में इवेंचुअली दे गो एंड सर्च गॉड, ठीक है, दे फॉलो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इवेंचुअली क्या होता है, दे आर गेटिंग टॉस्ड इनटू द ब्रेस्ट ऑफ गॉड. ठीक है. So as promised, let us also discuss the same paragraph again from the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोग इसको एग्जामिनेशन में कैसे प्रेजेंट करोगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स फॉर अराउंड 10 मार्क्स एंड योर आंसर नीड्स टू बी वेरी प्रेजेंटेबल एंड वेरी अप्रोचेबल. सो द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाज लाइक the same paragraph that we have discussed a couple of seconds before. Yet let him keep the rest, but keep them with ripening restlessness. Let him be rich and weary, that at least if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. So I am like I have been like now so many videos old saying this thing to my students and my subscribers that whenever the question comes of reference to context, you have to divide your answer into 3 categories: reference, context and comment. This helps you to present the answer in a very interesting way, and also remember guys, whenever you present an answer in a point wise system or in such a systematic manner, that also grabs the attention of the examiner. And as I said, this question comes for 10 marks, so we have to be very presentable here. So in the reference part, basically you have to write that these lines have been taken from the Pulley by George Herbert, who happens to be a metaphysical poet, and this will do in the reference part. In the context part, you have to like explain that in what reference these lines were saying, कहाँ से इसको totally abstract किया गया है. तो context में you can write it as like that actually God is trying to give all the blessings to mankind, starting from strength, then beauty followed, then wisdom, honor and pleasure. And God, what he did, he left rest at the bottom of the glass of blessings and opt not to give it to the mankind, because if God happens to give all the blessings, then eventually what will happen, the entire mankind will start worshipping the virtues rather than God. Eventually our destiny of life will not be fulfilled. Considering the fact also that George Herbert happens to be a priest of the Church of England, his all poems gives a spiritual message, a spiritual order, and helps us to connect and see the greater picture in all. So ये सब आप लोग ओवरऑल समराइज कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट पार्ट में. कमेंट में आपको स्पेसिफिकली लिखना है अबाउट दिस पैराग्राफ, एंड एज आई टोल्ड बिफोर, थोड़ा बहुत प्लॉट भी डिस्कस कर सकते हो इन द कमेंट पार्ट, बट येस, स्किप राइटिंग एनी irrelevant things in the comment which will actually bore the examiner. So skip those things. ऐसा मत सोचो कि आंसर को ज़्यादा बड़ा करना है तो पूरा प्लॉट ही डिस्कस, पूरा समरी लिख देते हैं कमेंट पार्ट में. ऐसा भी मत करो. थोड़ा बहुत प्लॉट को डिस्कस करना इज़ लाइक ओके from the answer point of view, but yes, don't go in too much details like writing the entire summary or analysis or commentary of the poem. So this is the video guys. Hope you have understood the entire analysis and summary of the poem The Pulley by George Herbert, and also understand the significance of this poem from the examination point of view. Last year में इससे एक सवाल पूछा गया था. तो अगेन ए जेंटल रिमाइंडर टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स एंड दोस्त हु आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड कि आप लोग वो वीडियोस जो हम लोगों ने प्लेलिस्ट में स्पेसिफिकली अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी गिवन, यू डू कंसिडर वाचिंग दोज videos in the playlist and running the entire playlist, and also do consider subscribing this channel if it helps you in any way, and share it with your friends. And we are still hoping that in the next coming days we'll be coming up with a lot of other videos from the other 2 subjects, that is the British drama and aspect of languages.
That's I think it is MEG-4 and your MEG-2 in specific. Till then, stay safe, stay at home, and as usual, God bless you and thank you all.